हो गया how to start Good morning, everyone, and welcome to my presentation. Respected Dhani sir, all the consultants, and my dear seniors, thank you so much for giving me your time. Let's start presentation on the classification of anti-epileptics. My moderator is Dr. Arpita Negi, ma'am. Here in these slides, we'll see the classification, the adverse effects, drug interactions, and then we conclude the slide. First of all, classification of seizures. How many types of seizures can we see? The focal onset seizures, formerly known as the partial onset seizures. The focal aware seizures, previously known as simple partial seizures. Focal impaired awareness seizures, also known as complex partial seizures. And focal to bilateral tonic-clonic seizures, also called grand mal seizures. The next is generalized onset seizures, generalized tonic-clonic seizures, previously known as primary generalized tonic-clonic seizures, and the generalized absence seizures, also called petit mal seizures, myoclonic seizures, atonic seizures, and epileptic spasms. Let's see how they work, the anti-epileptics. They work in three ways. The first is stabilizing the ion channels between the various neurons. Next is neurotransmitter modulation. They modulate the inhibitory and the excitatory neurotransmitters between the synaptic junctions. And they balance the excitation and inhibition of the neurotransmitters. Let's see the various drugs used in different types of seizures. Focal or partial seizures, we use carbamazepine, oxcarbazepine, lacosamide, phenytoin, and gabapentin. For focal and generalized seizures, we use levetiracetam, phenobarbital, prednisone, and phalbamine. For generalized seizures, we use valproate sodium, topiramate, and zonisamide. Adverse effects. They affect our bone health by decreasing the bone density. They modulate our glucose metabolism. They change our vitamin hemostasis. They have adverse effects on pregnancy. They change our lipid metabolism and increase the amount of LDL. They change the antioxidant defense system of the body, and they also cause weight gain in long-term uses. Drug interactions. There are two types of drug interactions, enzyme induction and enzyme inhibition. The anti-epileptics that cause enzyme induction are carbamazepine, phenytoin, phenobarbital, trimidone, topiramate, oxcarbazepine, and the enzyme inhibiting drugs are sodium valproate, levetiracetam, gabapentin, tiagabine, and pregabalin. Why was this classification important for us to know? To understand the classification is crucial for optimal treatment decisions and minimizing adverse effects, choose wisely, and empower lives of our patients. all the security Thank you. material.
कोई बात नहीं। कहाँ से मिली बुक के? आप कौन सी बुक पढ़ते हो मेडिसिन की? केकेटी केटी केटी तो फार्माकोलॉजी की है ना, मेडिसिन की ये फार्माकोलॉजी। मेडिसिन में कौन सी बुक पढ़ी है? कौन कौन सी बुक पढ़ी है? नाम पता है आपको मेडिसिन की कौन सी बुक का? बुक क्या पढ़ते तुमको क्या पता? एलिसन सुना है ना? एलिसन का ठीक है। आपने प्रेजेंटेशन में बहुत वो है तो जैसे आप एडवर्स किसका एडवर्स? तो आपने खुद ही बताया एक इंड्यूसर है ग्रुप, एक इनहिबिटर है अगेन ग्रुप। साइड इफेक्ट तो हर एक उसका होता है। आपका टॉपिक तो क्लासिफिकेशन था ना सर? सर क्लासिफिकेशन को था, वो एडवर्स इफेक्ट अगर नहीं हो तो चलता है। ठीक है, और जो आपने शुरू में बताया क्लासिफिकेशन ऑफ सीजर्स, वो कहाँ से, वो क्या है क्लासिफिकेशन? वो बहुत शुरू में है। तो इसमें क्या है, जब भी आप कोई भी आप चीज पढ़ते जाओगे कहीं पर भी, तो आपको सोर्स पता होना चाहिए। तो बोल रहा है कि आप गलत बोल रहे हो, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने बुक से पढ़ा। आपको सोर्स बताना पड़ेगा। बाद में कहेगा नहीं आप गलत बता रहे हैं, ये सीजर नहीं। ठीक है, ठीक। सीजर क्या होता है? सीजर की डेफिनेशन है। ठीक। आप आपके मॉडरेटर हेल्प करने के लिए आपको, दिस इज लर्निंग एक्सरसाइज, जस्ट वांट ओके। you're a डॉक्टर, आपको आके पेशेंट, कोई भी पेशेंट क्वेश्चन पूछ सकता है। आपके पेशेंट ऐसे नहीं है कि आपने दवाई लिखी वो जाके खाएगा। वो इंटरनेट पढ़ेगा, बोलेगा डॉक्टर साहब आपने ये क्या लिखा है, इससे का ये साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो आपको तो यू हैव टू बी अहेड ऑफ द गेम ना, उनसे ज्यादा स्मार्ट होना है आपको। Okay, ये तो कोई भी निकाल लाएगा। ठीक है, तो यू हैव टू लर्न मोर देन दैट। ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग बहुत जरूरी है डॉक्टर के लिए। कहीं भी बुलाएंगे आपको, ये आ जाओ हमारी कॉलेज में, आप जो है तो फेलिसिटेट करेंगे कि आपको पता हो हेल्थ के बारे में। ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग आनी चाहिए, और उसके लिए आपको सोर्स सही आना चाहिए, ताकि अगर कोई आपका वीडियो बनाए और यूट्यूब पे डाल दे, ऐसा ना हो कि डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। Good morning. Today, I, Ayushi Goyal, is here to present my seminar on topic GABA painting. My moderator is Dr. Abhishek Ranjan. Introduction. It is a neuroepileptic drug that consists of a GABA molecule. GABA molecule is inhibited CNS neurotransmitter. Gabapentin is a lipophilic drug that crosses blood-brain barrier and binds to the cyclohexane ring. Mechanism of action. It is centrally acting GABA agonist with high lipid solubility aimed at facilitating its transfer across blood-brain barrier. It has high affinity to a protein that is present in the cortical membrane with voltage-gated calcium channel subunit alpha to delta in CNS and modulates the calcium influx in hyperexcited neurons. Its pharmacokinetics absorption. It is orally absorbed and bioavailability is about 60 to 70%. It is distributed in the blood in unbound form and crosses blood-brain barrier. It is not metabolized in human body
and excretion is through renal in unchanged form. Half-life is 5 to 7 hours. Therapeutic use. It is a anti-epileptic drug that is used for focal onset seizure with or without progression to bilateral tonic-clonic seizure. It is also used in neuropathic pain that is due to post-herpetic neuralgia in adults or pain due to diabetic neuropathy. It is also used in vasomotor symptoms like hot flashes in women with breast cancer. Dosage. It is orally given with regard to males and it is usually given 3 times daily and interval not more than 12 hours. Usual dose is 300 mg TDS and not more than 1.8 grams. Drug interaction. 12. जिसमें मतलब TDS एंड जो इन बिटवीन डोजेस का वो टाइम ड्यूरेशन है 12 से ज्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहिए. ज्यादा नहीं करना चाहिए, मतलब कम कर सकते हैं. 8 घंटे दे देंगे ना. Yes, no, 8 wait. घंटे देना है. Yes, ma'am. मैं समझ में आ जाएगा ना भी brother. Ma'am, because it's tolerance difference. Ma'am, good man and women. Yes, ma'am. Ma'am, because tolerance varies in patient. Ma'am, tolerance के ऊपर डिपेंड करता है पेशेंट की, क्योंकि अभी न्यूअर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है तो अभी स्टडीज ऑनगोइंग है तो जो टॉलरेंस है उसके बेसिस और ये पे. डोज किसका डोज है? ये सॉरी एपिलेप्सी के लिए एंटीएपिलेप्टिक का डोज है या पेन का डोज है? मैम एपिलेप्सी के लिए न्यूरोपैथिक पेन के अकॉर्डिंग फर्स्ट डे हम 300 mg ओडी देते हैं, फिर नेक्स्ट डे 300 mg वीडी एंड देन थर्ड डे 300 mg TDS and then according to the severity of the pain. But not more than 1.8 grams. बताओ ना फिर, जैसे आपने अभी बोला यहाँ पे तो लिख देते हैं. Drug interaction. Antiepileptics reduces the bioavailability of the drug and cimetidine decreases the rate. And convalescent drugs do not show much effect. Morphine increases its plasma concentration. Adverse effect. Common adverse effects are somnolence, fatigue, dizziness, and some are system-based like CNS, fatigue, somnolence, dizziness, ataxia, nystagmus, tremor. In serious peripheral edema and vasodilation are more common. Eye, throat, diplopia, rhinitis, pharyngitis, dry throat. In genitourinary impotence is more common. In hematologic leukopenia, in skin pruritus and abrasion. Other abnormalities like dental abnormality, increased appetite, weight gain, back pain, myalgia. References Goodman and Gilman. Common are somnolence, fatigue, ataxia. वीकनेस होकर पेशेंट गिर जाएगा, फ्रैक्चर या बोन डेंसिटी कम कर देगा? Bone density में voltage treated calcium channels. So, The irony is that it is normally used in pain, ना? हाँ, तो पेन में मोस्टली there is some spinal abnormality जिसकी वजह से बैक पेन हो रहा है और वो दस्त लग रही है. अभी हम गाबापेंटिन देते हैं और अगर वो बैक पेन because we saying that because of more than that's why it causes back pain, but we give it for pain also where there is like impingement of nerves and all. neuropathic pain. न्यूरोपैथिक पेन में देते हैं कि Yes, इम्पेयरमेंट ऑफ नर्व्स होता है. इम्पेयरमेंट ऑफ नर्व्स इसलिए होता है क्योंकि स्पाइनल प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ऑलरेडी स्पाइन का जो गैप है वो इंटरवेंस कम है. ऊपर से अगर ये और बैक पेन फ्रैक्चर करेगी तो व्हाट इज द क्लास में हम गलत है. Ma'am, they are मैम ये एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं
आर्टिकल क्या, बाकी जो बुक में थे वो सोमनोलेंस, फटीग एंड एटेक्सिया मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स थे। वाले तो भर भर के लिखते हैं, ये book को नहीं पता। बस ये वाली स्लाइड मैम, उसमें बुक में सोमनोलेंस, फटीग एंड एटेक्सिया इज गिवन। ये वाली आपने कहाँ से ली बेटा advice? एक आर्टिकल से। आर्टिकल का रेफरेंस बताओ, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल तो मैं भी गूगल पे कुछ डाल दूंगी। आर्टिकल शुड बी एटलीस्ट अ पीयर रिव्यूड जर्नल में, अच्छे और रेस्पेक्टेबल जर्नल का आर्टिकल होना चाहिए। ऐसा था? ये मत बोलना वेब एमडी से लिया, प्लीज ये मत बोलना। गूगल से तो नहीं लिया ना था। ना कौन सा आर्टिकल था, कुछ डाला है बेटा आपने रेफरेंस में? ना लेकिन ये है, सब जो को बोले थे मॉडल से कॉम्बिनेशन any questions, comments, or clarifications? Thank you for visiting us. Please go and start. Pradyuman was ma'am. Serial. What slide, ma'am? मैंने तो तुम टॉपिक्स तो पूछ के जाना, तुम टॉपिक्स भी नहीं बता रहे देखो, तुम बता हम कल ठीक है, तो बहुत ही बेकार था, तो दोबारा से ठीक हो सकता है, ठीक हो सकता है। ये तो दिस मिस्टेक अगेन, तुम लोग इस चीज को सीरियसली ले रहे हो। तो सोच भेज दो कि बात नहीं,